Good evening, everyone. I will be talking about an important chapter in political science, that is, political parties today. So, what are political parties, right? A political party is a group of people who essentially come together with the objective of contesting elections to be able to hold power in the government. सो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आते हैं जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो गवर्नमेंट में पावर एक्सरसाइज कर पाए उनके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक ऑफ कोर्स एक लीडर होना चाहिए, दो उसमें पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स होने चाहिए, एंड तीसरा उसको एक सपोर्ट हो। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो पावर में नहीं आएगा, मेंबर्स नहीं होंगे तो कुछ काम नहीं होगा, और लीडर्स जो होते हैं दे आर द फेस ऑफ द पार्टी। What are its functions? So parties, they contest elections. So most of the democracy elections are essentially fought amongst the main primary parties. They put forward different policies and programs from which the voters choose. For example, एक पार्टी अगर बोलती है कि वो एकदम पेट्रोल के रेट्स को सब्सिडाइज करके हम सबके लिए एक्सेसिबल कर देगी, while the other party presents its ideas on, say, things like कि वो जॉब मार्केट में एकदम उसको फ्लरिश करवा देंगे एंड काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल करवा देंगे। वो लोग अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने प्रोस्पेक्ट सामने रखते हैं फ्रॉम विच द वोटर्स चूज फ्रॉम। दे ऑफ कोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री कि कंट्री में क्या लॉज फॉलो होंगे, एंड दे रन द गवर्नमेंट, दे फॉर्म द गवर्नमेंट। जो भी पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है। जो पार्टीज लूज करते हैं वो लोग ऑपोजिशन का रोल करते हैं। दे पुट चैलेंजेस एंड दे कीप अ चेक ऑन द फंक्शनिंग बाय constantly questioning and criticizing the role of the ruling party, and they also shape public opinion। स्टेट एंड नेशनल पार्टीज तो कुछ पार्टीज होते हैं जो सिर्फ नेशनल लेवल पे compete करती हैं, और कुछ होती है जो सिर्फ स्टेट लेवल पे करती हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाया है। सो अ पार्टी दैट सिक्योर्स 6% votes in the legislative assembly and wins 2% seats in a state party is recognized as a state party, and a party that secures at least 6% votes in the Lok Sabha elections and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. What are some of the challenges that are faced? So there are a lot of problems which are present in the political system. So one is there is no, or there is very little internal democracy. So within the party, कौन लोग क्लाइम कर रहे हैं इन द पावर स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, एंड कौन लोग एकदम टॉप पे पहुंच रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। सेकेंडली, देर इज़ अ ह्यूज टेंडेंसी ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट जिनके हाथ में एक बार पावर आ जाती है वो उसी को अपने पास अक्यूमुलेट करके अपने ही ब्लड रिलेटिव्स में पास ऑन करे, ताकि the power of the party remains in the hands of the people they trust, and it remains in the hands of the like in their blood relatives. Money and muscle power is there is a lot of problem that people who are extremely affluent, जिनके पास बहुत पैसा होता है बहुत सारे resources होते हैं, वो ज़्यादा spend कर पाते हैं in campaigning, in like using their money more effectively to win over the parties जिनके पास इतना money और वो नहीं होता है। And a lot of times parties are not able to offer meaningful choice to the voters. In other words, parties जो होते हैं they're most or less they're same in their ideologies, but वो लोग बिल्कुल minute और छोटे छोटे differences like their way of implementation, या वो उस पर्टिकुलर पॉलिसी को जो आइडियोलॉजिकली सेम ही होगी बी पार्टी से, वो ए पार्टी उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेगी या उसको वो कितने साल में इम्प्लीमेंट करना चाहेगी, जिसकी वजह से the choice amongst the people gets extremely lessened. So with that we come to the conclusion. Thank you so much.